Thank you very much. Now I will again discuss the addition of 4-digit number, part 2. Addition of 2 4-digit numbers. Part 2. And I will give an example, but I am going to use 3 methods for addition. First, the vertical method as usual. So, example, one of the part 2. Add 2, 4, 3, 4 and 1, 3, 5, 7 by regrouping at tens and ones. Here it is clearly written that this regrouping is at tens and ones, not h and thousands. So, what is solution? First method. By vertically. Just write 2, 4, 3, 4, 1, 3, 5, 7. O, T, H, TH. अब देखिएगा, just say addend 1, addend 2 and it is sum. अब यहाँ देखिए regrouping at t and 1s. Why? Because sum of 4 and 3 at h is less than 9. Sum of 2 and 1 at th is equal to less than 9. So, regrouping is not between th and h. Regrouping is only done between t and o. So, how will do? Step 1. At o, add 4 and 7. Don't miss to write ones. तो क्या हो जाएगा ये 4 plus 7 ones are 7 ones plus 4 ones. Obviously, by forward counting. As. अब देखिए, write the largest number 7, make 4, 1, 2, 3 and 4 square. 1, 2, 3, 4. 7 and 4 are addend. अब write 8, 9, 10, 11. अब देखिए O हो गया, T हो गया. Here it is regrouping between O and T because you have to write 1 at here and carry over 1 here. So step 2 क्या हो जाएगा? Step 2
step 2, write 1O. Why I am writing it is important कि इस 1 को O के नीचे ही लिखना पड़ेगा. At ones of sum. ये पोजीशन वंस ऑफ द सम है क्योंकि सम का वंस है. एंड कैरी ओवर 1t above t of addend 1. क्योंकि addend 1 का t ये है तो इसको ऊपर 1 हो गया जो है. स्टेप 3, at t add 1, 3 and 5 is equal to 1 plus 3 plus 5 or 5 plus 3 plus 1. Just write here T, 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 T. Here for such problem there is no go for this blockwise because student know 5 plus 3 is equal to 8 and 8 plus 1 is equal to 9, but I am doing for convenience of the children. 5 make 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comma then 1. अब देखिए 5, 6, 7, 8, 9 इक्वल टू 9t. अब फिर क्या हो गया? स्टेप 4, राइट 9t एट t ऑफ सम. यहां लिख दिए 9. Now this 91 is regrouping, but H and TH is without regrouping. So now step 5. Step 5. Very easy. At H and TH, at H and TH, the sum is 7 and 3. Matter ends, this is the 7 and this is the 3. Now, I am going to do method 2. What is the method 2? I am just deleting the step 5. I am rewriting this again for simplifications. Method, देखिए सेकेंड मेथड. By regrouping, tens and ones. This is more easier, convenient than the forward counting. कैसे है देखिए 2, 4, 3, 4 O T H T H. Then 1, 3, 5, 7. अब इसको कैसे लिखिएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म 2H
नो 2th, देखिए 2th प्लस 4h प्लस 3t प्लस 4 1s, यहां देखिए 1th प्लस 3h प्लस 5t प्लस 7 1s। जस्ट यहां पर, अब यहां पर देखिए इसको लाइन खींचिए, वंस को जोड़िए, तो ये आपका जो प्लस 11 वंस हो जाएगा, ये 8t हो जाएगा, प्लस 7h हो जाएगा, प्लस 3th हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब 11 वंस कैसे लिखा जाएगा? 11 वंस इज इक्वल टू 1t प्लस 1 वंस, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब क्या करेंगे? अब यहां पर 11 को कन्वर्ट करिए, इज इक्वल टू 3th प्लस 7h प्लस 8t प्लस 1t प्लस 1 वंस। अब ये 8t या 1t को रीग्रुपिंग कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड द रीग्रुपिंग एट Tn1। सिंपल, 3th plus 7h plus 9t plus 1 ones. It is expanded form, but what is the short form? 3791. O T H T H. It is called short form. Short form or standard form. You can also call it as a standard form. अब देखिए ये दो मेथड बहुत पॉपुलर हैं जो है। अब देखिए मैं आपको नंबर लाइन मेथड थोड़ा डिफरेंट वे में बता रहा हूं, इसको आई एम ट्राइंग टू सॉल्व यू, बट थर्ड मेथड आई विल टॉक ऑफ द नंबर लाइन्स। So I will just delete this one. अब देखिए थर्ड मेथड है, केवल एक एग्जाम्पल दूंगा, बाकी बच्चे कर लेंगे। थर्ड मेथड, नंबर लाइन। ये प्रॉब्लम भी है, ये क्वेश्चन भी है और मेथड भी है। आई विल डू ओनली फॉर एट वंस। सो फर्स्ट नंबर लाइन एट वंस। अब देखिए एट वंस में क्या ऐड करना है? 4 and 7। तो यहां पर क्या है कि सम ऑफ 4 and 7 is more than 10, more than 10, and after tens the next tens is 20. Be careful, I am saying अगर 1 डिजिट का है तो लोएस्ट 0 है और 1 फर्स्ट टेंस 10 है, लेकिन अगर 10 से 11 है तो 11 का लोएस्ट 10 है और 11 का हाईएस्ट टेंस 20 है। सो हियर आई एम राइटिंग ड्रॉ नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 20, या ध्यान से गया, बिकॉज the sum at once is more
R इक्वल टू 10, मैंने 10 के बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 to 10 हो जाएगा, लेकिन मोर होगा तो 20 पर ज्वाइन होगा जो है। तो इसलिए अब कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं जो है। आई एम यूजिंग द न्यू टेक्निक। जैसे इसको खींच दीजिए नीचे, या देखेंगे ध्यान जो है। आई एम यूजिंग बाई स्केल वाइज, हियर इट इज 17, सो आई एम मेकिंग इट 20। अब देखिए, इफ यू रिमेंबर when I asking students to draw the line straight line, so it will give knowledge addition that how the straight line is drawn. And then I said first put 0 and second put 20 at a bigger line, just see. So see 0, 1, 2, 3, 4 all 20, but what I said, put bigger line 20, 10, 5, then 15. And 0 to 1 you divide like this. Now it is in a centimeter, 20 centimeter, so it will be equally divided. So what you can do, you can write 0 here, या ध्यान सुनिएगा, और 5 is here, बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है, 10 is here और 15 is here and 20 is here. Oh, 20 is here. So 5, 10, 15 and 20. After doing this thing, you can delete this one and draw a line like this. As usual, I said, divide this 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Write also 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. This will be at equal distance. Now, what is the number? 4 and 7. Draw here, vertical. Here. Join this like semicircle, write 4. Then 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, here it is a mistake. Here I have done at 5. This is not correct. 4 is up here. Draw 4 here. Oh, draw vertical line 4 here. Join this and draw here. So this semicircle gives 4 number. Then 5, 6, 7, 8, 9. Then 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 here. Make this semicircle. And if you remember, I have asked the students to have the practice of circle, semicircle, vertically, horizontally. That is going to be used here. So 4 plus 5, then join 0 to 9. 4 plus 5 is equal to 9. 4 plus 5. The 4 plus 7, just see. Again, 4 plus 5 can be done like this. But 4 plus 7, here 4 after it should be 7. So I am just deleting this one because it is my mistake. देखिए 4 तो ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. And 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 will come here. Then do like this. 7, 4. And then joint 0 and 11. Things are clear? At 11 means this is O
and this is T. Write 1 here, tens here. This also you can do on the number line. Similar way, 0 to 20, first do 3, then 5, then 1. Or 1, 3, 5, and so on. So that is a third method where you can do similarly means इसी तरह one can add T, H and TH. Thank you very much.